Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shahid Hussain with a new topic, and today we are going to discuss our second topic of the elaboration likelihood model series. In our last discussion, we discussed what is elaboration in the elaboration likelihood model, and today we are going to discuss the central route to persuasion, and our next lecture will be on the peripheral route to persuasion. When we talk about the central route to persuasion, so the focus is on persuasion, as the elaboration likelihood model is a model of persuasion. It tells us that how persuasion works in two different ways. तो जब सेंट्रल रूट टू परसुएशन की हम बात करते हैं और इसी तरह पेरिफेरल रूट टू परसुएशन की बात करते हैं, तो द बेसिक थिंग इज परसुएशन. तो थोड़ा सा दो वी हैव डिस्कस अ लॉट on the persuasion, regarding the persuasion, even when we were discussing the elaboration, तो वहाँ पर भी हमने persuasion को एक डिस्कस किया था, रिपीट किया था. However, let me revise a little bit regarding persuasion, and then we will be focusing on our central route to persuasion. Persuasion क्या है? Persuasion refers to the process by which a person's attitude, belief, opinion or behavior is without duress influenced by communication. So we can say that persuasion is the communication to influence choices, and we use the art of persuasion to sell ideas, concepts and products, etc. जब हम elaboration likelihood model की बात करते हैं, तो basically a model of persuasion that acknowledges two different means of processing the persuasive messages is the elaboration likelihood model, which was presented, which was developed by Petty and Cacioppo in 1986. So it is a model of how attitudes are formed and changed. किस तरह से attitude form किए जाते हैं, किस तरह से change किए जा सकते हैं, behavior किस तरह से change किए जा सकते हैं. These are the areas which elaboration likelihood model explains. Elaboration likelihood model is based on the elaboration continuum, which ranges from low elaboration means low thought to high elaboration means high thought. When we were discussing what is elaboration, तो हमने वहाँ पर भी elaboration continuum की बात की थी, which ranges from low elaboration means low thought to high elaboration means high thought. और elaboration continuum is the soul of the elaboration likelihood model, और यही differentiate करता है between the central route to persuasion and the peripheral route to persuasion. So elaboration की हमने ये भी बात की थी कि elaboration refers to the cognitive work involved in processing a persuasive message. जो एक persuasive message है, persuasive communication है, उसकी analysis में कितना cognitive work, कितना mental work involved है, कितनी thought process involved है, that is elaboration. और वो एक elaboration continuum, वो सारा process जो है एक elaboration continuum को तरतीब देता है, which is the soul to elaboration likelihood model. हम ये भी आगे already बात कर चुके हैं कि ELM model distinguishes between two routes to persuasion, the central route and the peripheral route. अब सेंट्रल रूट की जब हम बात करते हैं, सारा फोकस अब सेंट्रल रूट पे करते हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके डिफरेंट वेरिएबल्स को अगर हम जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सेंट्रल रूट टू परसुएशन का वो है कि सेंट्रल रूट प्रोसेसेस इन्वॉल्व या रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट. सेकंड ये है कि इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ ए परसुएसिव कम्युनिकेशन like a speech, an advertisement, etc., to determine the merits of the arguments. Merits of the arguments which have been presented in the persuasive communication. जो एक communication में जितने एक communicator जो arguments present करता है, उसके merits को, उसकी careful scrutiny जो है वो जब की जाती है, तो वो central route to persuasion के उसमें umbrella में आ जाता है. In order for the message to be centrally processed, a person must have the ability and motivation to do so. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक तो ये कि आपके रिसीवर की, आपकी जो ऑडियंस है, that must be able to analyze your communication centrally, and second, that receiver or that audience must be motivated to do so. ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी सेंट्रल रूट टू परसुएशन के को यूज करने में या उसके इंतखाब करने में. Under these conditions, a person's unique cognitive responses to the message determine the persuasive outcome. वो कैसे? वो इस तरह के if favorable thoughts are a result of the elaboration process, the message will most likely be accepted. अगर favorable thoughts आपकी communication के response में, persuasive communication के response में centrally जो central route use करते हुए favorable thoughts generate हों आपके receiver के mind में, तो क्या होगा कि आपका message is most likely that will be accepted. Or if unfavorable thoughts are generated while considering the merits of the
presented arguments, the message will most likely be rejected. Another very important aspect of the central route to persuasion is that central route leads to lasting change that resists fading and counter attacks. और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि the central route is involved when the receiver actively processes the information and is persuaded by the rationality of the arguments. क्योंकि वो arguments को actively process करता है, उसकी rationality देखता है और उसकी rationality देखने के बाद एक decision जब एक receiver करता है तो उसकी फिर जो decision होगा वो firm होगा, वो long lasting होगा, or that will be resisting to the counter attacks which will be coming in the future. When the central route to persuasion is active, the receiver is said to be involved in a high elaboration. And when persuasion occurs through the central route, it is usually because high quality arguments are being strongly presented. High quality arguments are the important aspect, the most important aspect of the central route to persuasion. कम्युनिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कम्युनिकेटर जो है वो हाई क्वालिटी आर्गुमेंट यूज करता है और उसके बाद फिर एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ द रिसीवर इज कंसर्न कि वो किस हद तक है और वो किस हद तक उस हाई क्वालिटी आर्गुमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके बाद फिर अपना डिसीजन जो है वो सामने लेके आते हैं. With the central route, persuasion is most likely to occur when the receiver is led to have predominantly favorable thoughts about the advocated position. So a key question arises that what factors lead the receiver to have either favorable or unfavorable thoughts about the recommended position. कौन से ऐसे factors हैं कि एक receiver को वो favorable thoughts की तरफ लेके जा रहे हैं या unfavorable thought की तरफ लेके जाते हैं when we talk about the central route to persuasion. Basically two factors seem to be important in this regard. वो कौन से factors हैं? The first is the agreement between the receiver's initial position and the recommended position. If an advocated position is one toward which a receiver is already inclined, presumably the receiver will be favorably disposed to the message. अगर एक recommended position जो एक persuasive communication के through एक receiver तक आ रही है वो उसके जो already held dispositions हैं या already उसके जो frame of reference है, जो उसकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है या जो उसकी एक बिलीफ बन चुका है, उसका ओपिनियन है, एटीट्यूड या बिहेवियर है, उससे अगर रिलेट कर रहा है आपकी रिकमेंडेड पोजीशन और आपकी परसुएसिव कम्युनिकेशन तो क्या होगा कि फेवरेबल थॉट्स जो है वहां जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. द सेकंड फैक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गुमेंट. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गुमेंट. दैट टू व्हाट एक्सटेंट द आर्गुमेंट्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन in the persuasive communication. तो अगर वो argument strong है तो that will also help in the persuasive communication. So the stronger or more carefully defined the argument, the more likely it is that the receiver will be favorably disposed to the message. जब आप central route use करना चाह रहे हैं तो अपनी persuasive communication में strong arguments और carefully organized arguments जब आप present करते हैं अपनी communication में तो आपकी जो persuasive attempt है वो उसके successful होने के chances बढ़ जाएंगे. So these were some of the important aspects of the central route to persuasion. और अब elaboration, what is elaboration we have already discussed. So ये हमारा central route to persuasion हो गया. In our next lecture we will be discussing the peripheral route to persuasion and then our series on the elaboration likelihood model will be completed, and I do hope that after getting all these three topics, three lectures, you people will be in a better position to grasp the concept of the elaboration likelihood model. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाले लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप तक रेगुलर पहुंचते रहें. अपनी दुआ में शामिल रखिएगा. बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.